Assalamu alaikum everyone. My name is Sara Pervez and I am currently looking after the Master's Program in Technology Management and Entrepreneurship at STSP. The purpose of today's chat is to talk about these new initiatives at STSP. So let me just quickly give you a background. For decades, STSP has been known for a general management program portfolio. So we have MBA and MBA, which are very successful programs, and our methodology, which is case-based teaching, which has proven track record. And of course, our graduates have made their mark in the industry also. Lately, we have enhanced our portfolio and added some verticals or specialized programs in our portfolio as well. Currently, there are 6 programs. 3 of them have been launched last year and 3 have been launched this year. Today, we're going to talk about the technology management and entrepreneurship program specifically. Again, since I am the director, I would have a very biased opinion about the program and what we do and how we do it. Today, I've brought 3 different perspectives for you on the program. And we're going to talk about it from the industry perspective, from the students' perspective, and from placement or human resource perspective. What is it exactly we're doing? How are we creating value? Why is it important that you understand the scope and the objectives of this degree? So this is going to be our chat format today. So let me just introduce my panelists first of all, and then we're going to start the discussion. With me is Badr Khushnood. He is currently titled as Executive in Residence for the degree. He has designed, curated, taught, and he's managing the program with us till date. So he's first on the panel. Then we have Ms. Toima Asghar, currently the Chief Human Resource Officer at Systems Limited, but is a very seasoned HR professional with multiple industry experiences. She's going to explain and introduce her experience in a bit. Then we have Ms. Amreen Afaq with us. She's currently a student, the first cohort of MSTME. She hasn't graduated yet, but I'm sure this 1 year has given her the extensive experience to talk about what this degree is about and what this isn't. So I welcome all 3 of you to this discussion, and I'd like Badr to start with his experience, and then I'll move on to Toima and Amreen. Please, Badr. Thank you so much, Sarah. Great introduction. And I think one reason I joined this program specifically was, and by the way, this is my first ever teaching experiment or experience. And मेरा एक खास reason इसको join करने का ये था कि industry में पिछले 15-20 साल में जो मैंने देखा वो एक बहुत बड़ा gap चल रहा था और वो ऐसा widen हो रहा है gap. और वो गैप ये है कि एक तरफ टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं जिनको जनरली हम आईटी या डिजिटल या जो भी आप अभी कहना चाहें हाई लेवल पे वो वाली एक कम्युनिटी है, और एक तरफ बिजनेसेस हैं, उनमें खास तौर पे कुछ एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं जहां आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ उसमें एसएमईज हैं मेजॉरिटी. अब इन दोनों में जब ये दोनों एक दूसरे के साथ काम, पहले ये अलग अलग काम करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब टेक्नोलॉजी की लाइंस ब्लर हो रही हैं और हम पेंडेमिक में भी देख रहे हैं कि बिल्कुल ही ओवरलैप होना शुरू हो गई हैं कुछ चीजें. तो वो आपस में बात नहीं कर पाते बिकॉज दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं और डिफरेंट व्यूज से लेंस से देखी जाती है एक ही चीज को. एंड आई ऑलवेज थॉट कि एक जरूरी प्रोग्राम है जहां एक ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रेजुएट और एक कंप्यूटर साइंस या डिजिटल के जो एलिमेंट्स हैं वहां कहीं कन्वर्ज हों. एंड आई थिंक दिस वाज वन डिग्री व्हिच रियली एक्साइटेड मी जब मेरी बात हुई एसटीएसपी में डीन से और आपसे कि ये दिस इज वेयर आई थिंक दिस इज द फ्यूचर जहां सब कुछ कन्वर्ज हो रहा है. जिस तरह मेडिकल साइंस में भी टेक्नोलॉजी आ गई, अकाउंटिंग में भी टेक्नोलॉजी आ गई, आई थिंक बिजनेस वाली साइड पे भी टेक्नोलॉजी आ गई और हमें उसको रिकॉग्नाइज करने की भी जरूरत है और उसको फॉर्मली प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके चलने की भी जरूरत है. So if you could quickly tell us what exactly are you doing right now and how is this relevant with the degree and its scope? So we'd love to hear about what exactly are you doing these days, Badr. What is keeping you busy? I think we've lost Badr, right? Yeah, yes. Okay, we'll move on to Toima while he reconnects. Please, okay. Toima, go ahead. Yeah, thank you so much, Sarah. As you know, my name is Toima, and I'm currently working with Systems Limited, which is one of the pioneers in the IT industry in Pakistan. It was established in '77, long time back. So before that, I've been associated with different kind of industries. Like I was associated with the academia side, with the wholesale, with the banking sector, and many other sectors. The main idea is that I always wanted to remain in HR because HR is something which is a passion.
And interestingly, whatever the industry I've worked with, the HR remained the same. So it's because it's about people. So people are same regardless of the industry, regardless of the company, smaller or larger, multinational, local. Ultimately, you need to interact with people. That's the passion, and that's the crux of my career. Thank you. Thank you, Toima. Thank you for being here. And that's exactly what we want, your perspective, people perspective on this degree and its scope. Thank you for being here. Amreen, please. Background and So I current think status. before starting my introduction, I would just like to express my gratitude to, Ma'am Sara, you, Sir Badr, and Ma'am Toima for, giving me the opportunity to share this platform with you all. A brief intro of myself would be that I'm an undergraduate from Kuala Lumpur in Islamic banking and finance, after which I was hired as a management trainee at a bank, and I've had about a year and a half of experience within the banking industry. And that is when I got enrolled in MSTME, and now I'm a full-time student at LUMS. Thank you, Amreen. Thank you, guys, for a very quick introduction. As I said, all these three people have a direct understanding of what this degree is, and they can actually appreciate and critique what we are doing and how it's being done. So let's just open this discussion, and I'll move with you, Badr, first. There are a lot of buzzwords when we talk about technology and entrepreneurship. So digital, tech, online, e-commerce, entrepreneurship. Is there real value industry में हो क्या रहा है, क्या scope है, या हम is it too early for us to define it? हो इस वक्त currently पाकिस्तान के ecosystem में आपके ख्याल से real value कहाँ पर है और किस तरह से degrees के through the younger generation can actually capture that value? So I'd love to start with you. जी थैंक यू सारा. सो बेसिकली आई थिंक अभी तक हम एक चीज जो हो रही थी, जो हम डिजिटल में देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट वो ये था कि आपको बाइट साइज्ड लर्निंग करनी पड़ रही है आफ्टर अदर डिग्रीज, जस्ट बिकॉज कि आपका देयर इज अ लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज, कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट है डिजिटल वाली स्पेस में, या जहां डिजिटल की बात आ रही है versus what is happening to that level. आपको third party या other courses और short courses या connectivity करनी पड़ रही है. इस काम के लिए I think having a dedicated connectivity is critical. और उसके लिए जो हमने ये degree है, I think this is extremely relevant. I think मेरा connectivity issue है. I'll let Toima take over. I'll just reconnect and come back. Sorry. No, it's okay. We'll let you reconnect. And Toima, maybe you can talk about how the industry has changed at a lightning speed in the last few years. How do you see this scope changing with the academic degree? Can we keep up? Can we catch up? How does it look for you? Please. Yeah, that's interesting dynamics because जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे requirement change होती जा रही है. लेकिन the good part is I'm so happy to see कि हमारा typical stereotypical किस्म के academic you can say syllabus से हम लोग बाहर निकल रहे हैं. So that is the need of time. अगर देखा जाए तो internationally भी आप देखें कि ऐसी ऐसी degrees मौजूद हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, क्योंकि और हमारे पास यही है कि जी MBA कर लिया, engineer बन गए या डॉक्टर बन गए, and that's about it. टीचिंग में चले गए, नर्सिंग में चले गए, एंड दैट्स अबाउट इट. इससे बियॉन्ड हम सोचते ही नहीं चाहते. इसी वजह से हमारी इकोनॉमी भी उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर पा रही जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट्स फ्लरिश कर रही हैं. सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आपको पार्टनरशिप चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर की, क्योंकि सिर्फ अगर एकेडेमिया ही सारी एफर्ट्स करता रहेगा तो स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और अल्टीमेटली कहेगा कि अच्छा आई हैव गॉट दिस पीस ऑफ पेपर, आई एम गोइंग टू इनकैश इट समबडी अब्रॉड, नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ तो स्कोप ही नहीं. पेरेंट्स भी उसको मारेंगे पीटेंगे और उसको कहेंगे भाई तुम्हें हमने पहले ही कहा था ये तो डिग्री बनती ही नहीं है. तो वो वहां पे आपके इंडस्ट्री और एकेडेमिया की कोलैबोरेशन इज द की थिंग. The corporate sector also needs to realize that there is a potential in the market and there are many job opportunities which can be created within the corporate sector to absorb these students. ये बहुत ज़्यादा important part है. तो as your degree evolves, तो इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है और इसको भी explore किया जा सकता है इस possibility को. Agreed. I think what I'm hearing from the industry also and from the students also कि uncertainty बहुत ज़्यादा है. हम चाहते हैं कि हमें पहले ही पता चल जाए कि हम जैसे प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं, डिग्री में एनरोल हुए हैं, तो क्या जॉब मिलेगी, कितने एवरेज सैलरी क्या होगी, कौन सा सेक्टर होगा, टाइटल क्या होगा. आई थिंक जब हम ये डिग्री डिज़ाइन भी कर रहे थे तो हमें डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा
सबसे पहली बात, मेरा और बदर हम लोग वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. मैं कोर्स आउटलाइंस और एकेडमिक ग्रेड्स की लैंग्वेज बोलती थी, बदर हैंड्स ऑन हार्ड स्किल्स, एक्चुअली करना क्या है, सीखना क्या है, वो बोलता था. सो आई थिंक हमने इस डिग्री के साथ काफ़ी स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया है. हमने टाइम शॉर्टन किया है, हमने 1 साल की बजाय 1.5 साल किया. 1.5 साल में से भी सिर्फ 1 साल कोर्स वर्क है. सो बाकी दे आर फ्री टू डू एंड परस्यू देयर पैशन. और हमने इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ईजी कर दी है. सो टू गेट इनटू दिस डिग्री यू डोंट नीड वर्क एक्सपीरियंस. आपका कहीं से भी अंडरग्रेड हो सकता है, आपका कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, and it's bare minimum. Your interests should be aligned. We should see that spark in you, that you want to make some change, get an impact, and you're in. So हमने काफ़ी इसको experimental mode में रखा है, and I really hope कि people can sort of test it with that kind of uncertainty and messy feeling कि we might not know what exactly will happen in a year and a half, but something good is going to happen. I want to move to Ambreen on this. Ki Ambreen, when you got in, what was your perception? And currently, what are you going through? क्या है mindset इस वक्त कहाँ पर पहुँचा है? So let's hear from you. I think if I talk about my experience, it was one that revolved around learning as well as unlearning. So when you get enrolled into a degree, that was a time where, you know, the pandemic was at its outburst and we knew that we were going to move towards online learning. So that was a challenge because उस वक्त लगता है कि नहीं हो सकता, आप लैपटॉप पे कैसे पूरे दिन बैठे रहेंगे. So it is a challenge when it does start. But I believe that this degree really changed my perspective about, you know, technology management, about how, you know, digitization has sort of created that efficient bypass. And then, you know, it comes towards entrepreneurship, which I personally was not something that I would have opted for, even self-employment, all of that. And, you know, this degree, ek hai, I believe there is this stereotype which says that entrepreneurship nahi seekh sakte. It is not a skill. But with this degree, it again changes your perspective and it sort of enables that entrepreneurial, you know, spirit within you. And while, you know, having said that, it gives you a very good holistic take on business strategy as well as, you know, technological strategy as well. So you are able to integrate technology with business strategy. And if I deep dive in, you know, course methodology, or agar main online learning ki baat karu, so in one word, I would say that it is an adjustment. And shuru mein it will definitely be challenging, but to be honest, it you know, it opened a lot of doors of learning, a lot of opportunities to learn, because ek to traditional learning hai, there is your course packs and you need to do readings. However, on the other hand, we were able to do a lot of on ground activity. That is, we were able to conduct surveys, we were able to talk to our guest speakers. We actually had a guest speaker from Sri Lanka as well, and that is not something that would have been there if online learning was not there. So I think all in all, if I'd say that while online learning has closed certain doors of interaction, it has definitely opened doors for opportunities to learn and opportunities to network. Thank you very much, Ambreen. Definitely a very safe and a guarded word by Ambreen. It was an adjustment. It was a 360-degree adjustment for everyone in the loop. So trust us, it wasn't planned like this, but we as Badar would call it, we pivoted and we actually tried to make the best of what we had. And I think, Badar, now I'll want to hear from you again. Going forward, the world is not going to be predictable or clearer in terms of what will change when. So I think getting comfortable with discomfort should be also a skill that we should sort of measure somewhere. Badar, please go ahead. जी बिल्कुल सारा, मैं एक्चुअली यही बात करना चाह रहा था जो आपने हाईलाइट की है कि इट इज लेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, इट इज मोर ऑफ the change which is happening and we need to adapt that change. और वो change अब constant है, change is the only constant. ये change पहले टेक्नोलॉजी वाले थोड़े से फील कर रहे थे, बट नॉन टेक सेक्टर्स में फील नहीं आई थी. बट आई थिंक पोस्ट पेंडेमिक हम सबको ये फील आनी शुरू हो गई है कि अब हमें जाहिर है कुछ ऐसे प्रोसेसेस हर बिजनेस में होंगे, फंक्शंस होंगे जिन्होंने ऑफलाइन होना है, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन और फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है. बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आई एम श्योर तोयमा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो पहले फिजिकल मीटिंग्स होती थी बहुत सारी, वो अब आई थिंक फ्रॉम अ कॉस्ट सेंटर पर्सपेक्टिव बहुत सारी ऑनलाइन मूव कर गई, जो कि पहले ऑपरेशनली कभी सोचा नहीं जाता था, इवन इन कॉर्पोरेट्स. तो जैसे तो मैंने कहा कि कॉर्पोरेट्स को भी चेंज होने की जरूरत है, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं. बट आई थिंक दिस डिग्री, the students who graduate with this degree can help other brands, other companies fast track that change quickly
and adapt to that new change very quickly. और I think एक और बड़ी important चीज है जो अभी अमरीन ने भी highlight की, the actual subjects being taught एक अपनी जगह of course उनकी importance है, but more importantly it is about understanding the fact to how to unlearn and relearn. I think इस डिग्री में आपको बहुत सारी चीजें unlearn और relearn करनी पड़ रही हैं, so there we had to challenge the status quo in different ways. So I think that's important to recognize कि ये डिग्री के खाली subjects या खाली डिग्री itself is not important, but having that understanding कि आपने कैसे आने वाली change को accept करना in different ways is something which we have tried to inculcate through this degree. और एक और चीज जो मैं पिछली जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ उस वक्त मेरी बात रह गई कि अब पहले हमें छोटे शॉर्ट कोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता था to catch up to learn कि डिजिटल कैसे हमारे लिए important है. But I think with this degree आपको एक holistic turn की, आपको एक अच्छा करियर के स्टार्ट से पहले आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाता है. आपका रैंप अप फास्ट ट्रैक हो जाता है before you jump into the career, अपने corporate career. और एक लास्ट चीज जो अमरीन ने हाईलाइट की वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी सबको समझना कि इस डिग्री में हम ना सिर्फ आपको जॉब सीकिंग के लिए प्रिपेयर करें इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट ऑल्सो जॉब क्रिएशन के लिए भी फ्रॉम अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिव. इवन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशंस जहां आप जाएंगे वहां एंटरप्रेन्योरल जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो यू विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट चेंज and help organizations improve themselves and adapt the new digital change. Correct. I think the most common question that we get from prospective students and industry also is कि आप लोग पढ़ा क्या रहे हैं? How are you different? आप लोग claim तो करते हैं, but what exactly is being done? So I'd like to quickly briefly highlight the outline कि जो आपका first semester है MSTME के साथ, that is going to be management core. और जब मैं मैनेजमेंट कहती हूँ तो मकसद ये है कि बिजनेस कैसे रन करना है, हाउ टू रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, वैल्यू चेन क्या होती है, वैल्यू ऐड कैसे करते हैं. सो हमारे पास NIC लम्स में बहुत सारे आते हैं आइडियाज़ जो कि ब्रिलियंट आइडियाज़, लॉट्स ऑफ जैसे कहना चाहिए कि बहुत एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बट दे कांट मेक मनी. नॉट एवरी आइडिया विल हेल्प यू मेक मनी or not every business model is replicable and scalable. So जब हम पहले कोर्स सेमेस्टर में, and I'll go to Amreen after this, we go in depth in an intensive 4 course semester जहाँ पे हम आपकी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करते हैं. वो मुश्किल सेमेस्टर है बहुत, उसको क्लियर करना मुश्किल है, उसके बाद बच्चे एकेडमिक प्रोबेशन पे जाते हैं. That is where we want to make sure कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो या किसी और के बिजनेस में एम्प्लॉयड हो, आपने वैल्यू क्रिएशन पे जोर देना है और सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को हाईलाइट करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो अगेन जो लोग समझते हैं कि बहुत टेक्निकल डिग्री है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कोई टूल सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यू विल हैव टीम्स हु हैव एक्सपर्टीज इन प्रोग्रामिंग एंड अदर टेक साइड्स. तो जो कोर टेक साइड है वो आपको टीम मिलेगी, आपने बिजनेस वैल्यू क्रिएट करनी है. सो अमरीन, would you want to talk about the core semester, उसमें क्या आपने सीखा, और second specialized semester जिसमें हमने entrepreneurship और tech management की बात की. So if you can just quickly tell us कि हम इसमें सिखाते क्या हैं और how does that help? Okay, so I think both these semesters were very much connected. So the first semester was, as you said, it was on management courses. So we went through courses of finance, economics, leadership, as well as marketing. And these were courses that were very important because I feel like while some of us were from business backgrounds, there were also some of us that were from engineering or technical backgrounds, and for them this degree was very important. Reason being is these management courses help both of the engineers and the business side come on the same page. So while that semester was there and we learned a lot of management related concepts, if I come to our second semesters, that was tech based. That was about technology operations. We studied technology and entrepreneurship within the same course, where there is a difference when you actually read a course line. तो आप course line तो पढ़ रहे हो, but sometimes you can't relate to it. However, we have these case studies and we actually have speakers and founders of certain startups coming in, and when they talk about their success stories, their failures, that's when you can actually relate with them, and that actually helps with the whole class participation. So
we were also able to bring in our own ideas. So when there was that entrepreneurial side, that entrepreneurial spirit would be awakened, we would bring our own ideas, we would work on them, and you're also given the opportunity of actually working in a business plan. And that is where your semester one comes in, being able to actually make financial statements, knowing marketing कब करनी है, phase 1 में क्या करना है, phase 2 में क्या करना है. And of course your leadership comes in, economics comes in, you need to know what the GDP is, what's happening around. So it was all very integrated, it was all very connected, and making a business plan, actually delivering a pitch in front of a panel, it gives you a head start, and it will give a head start for people who actually want to work on their businesses. So again, I think you are able to develop a sort of a model around a technological product, and this degree will enable you to do that. So first term is your management core, second term is your electives, specialized electives, where we go very, very deep into what the ecosystem is all about. And the third term, which Ambreen is going to start in, I think, 3 weeks, is going to be data analytics. So we're going to thread through the value of how it's done. And it's a layering process. And I think Badr can talk more about it, that if these layers are understood by you, you can create value in any firm you join or any startup of your choice that you want to pursue. So uske baad you learn by making mistakes, by wasting money and meeting people and doing it again and again. So I think it's a cycle that we put you on the right path. Badr, please go ahead. Want to add something? जी सारा, मैं आपसे बल्कि एक लेना चाह रहा था आपका ओपिनियन इस चीज पे कि मैं तो एज एन एग्जीक्यूटिव इन रेजिडेंस फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स ज्यादा थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ. आप लम्स की ग्रेजुएट भी हैं, आप लम्स में फैकल्टी में भी इन्वॉल्व हैं फॉर फ्यू इयर्स नाउ. आपने STSP को इवॉल्व होते भी देखा है, आप मार्केट को भी देखें कैसे एवोल्यूशन हो रही है और सारा कुछ. हाउ डू यू सी STSP की ट्रेडिशनल जेनेरिक डिग्रीज में एक स्पेशलाइज्ड डिग्री, and how do you see all the pieces of the puzzle being put together in that case? कि वो कैसे? So would love to have your thoughts there. देखिए, very quickly, yes, I was a trained MBA. I am an alumni also. I was raised and literally taught by STSP. मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा आपके उस डिग्री को, just no, but this is the need of the hour. So we've read the writing on the wall. It's not a survival game anymore. It is how quickly you'll read the signs. और since being a marketeer, हम ये teach करते हैं कि आपने अपने customer की needs and wants को preempt करना है, predict करना है, and you have to create value for them. So I think जो आजकल की जो रिक्वायरमेंट और वो नीड है वो जर्नलिस्ट डिग्री से मूव कर रही है अब. और अगर आप सप्लाई डिमांड भी देखें बदर, तो कितने MBAs हैं, कितने ग्रेजुएट कर रहे हैं, कितने प्लेस हो रहे हैं. पिछले 2 साल से हायरिंग पे, अब तोयमा वी कैन मूव टू तोयमा आफ्टर दिस, हायरिंग पे फ्रीज लगा हुआ है. वो कहते हैं हमें स्पेशल स्किल सेट चाहिए. आप MBAs और BBAs आर सैचुरेटेड इन द मार्केट. सो मुझे लगता है कि STSP का बड़ा टाइमली, बड़ा वाइज डिसीजन था कि इस पोर्टफोलियो में हमने 5-6 वर्टिकल्स खोल लिए हैं. हमने इंडस्ट्री को इनवाइट किया है, हमने अपना कंटेंट ओपन किया है, हमने कोर्सेज शेयर किए हैं, हमने मेथोडोलॉजी चेंज किया है. मैंने मार्केटिंग का कोर्स 5 डिफरेंट तरीकों से पढ़ाया था. उसमें केस स्टडीज थी, उसमें सिमुलेशन थी, उसमें इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस थी इन टर्म्स ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस स्टोरीज, एंड ऑफ कोर्स थ्योरी, लेक्चर, बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ. So yes, as I said, we don't have all the answers. It's a bit uncomfortable कि क्या होगा, कैसे होगा, but I'm very confident that we are with the times, if not ahead. And this pandemic was a total uncertain occurrence. We were not planning for this, but it happened, and I think we've done very well. So I am very, very enthusiastic. But as somebody said, don't be married to the solution, be married to the problem here. So my loyalties are very, very, very in place here. I want, as a grad school, it's our responsibility कि हम अपने youth को बताएं कि कैसे हालात change हो रहे हैं और उनको कैसे prepared रहना है. I would be doing a disservice to the school and to the youth अगर मैं उनको ना बताऊं कि ये MBA आपका 5-6 साल में redundant हो जाएगा. So I am very clear कि जो value creation होगी और जो supply demand है, it's on our side. So if there are 30 students graduating this year, the demand is huge. It's in thousands. Maybe Toima can talk better about the supply and demand and the profile. Toima, जो change हो रही है. बिल्कुल, एक चीज सिर्फ ऐड करना चाह रहा था, and just a disclosure कि मैंने भी ना पढ़ाते पढ़ाते इसमें आपके साथ कुछ सीखा भी है. और मेरी जो moment of learning थी, to be very honest, were the simulations. That weekend
with Dr. Jamshed was really valuable, and I really learned myself as well, even putting myself as a student through that. So I think it's not just new and different and engaging and exciting for students, बल्कि I think even for us it's exciting कि हम content की जो curation कर रहे हैं, because बहुत सारा content और topics और चीजें available हैं, but जिस Ambreen ने कहा वो having the right speakers and right startups ताकि correlate कर सकें audience curriculum के साथ is also critical. So I think even curation is something interesting which we are enjoying as well. Sorry, Toima, over to you. True. जी, so before I proceed, एक मेरा question बार-बार मेरे ज़हन में आ रहा था, तो I wanted to, कल भी जब हमारी discussion हो रही थी, after that I was just thinking to ask this question from both of you, Badr and Sara. That is कि हम जब बात करते हैं कि जी कोर्स डिजाइन कर लिया, कोर्स बन गया, डिलीवर कर दिया, बहुत अच्छा, बच्चे ने CGPA भी बहुत अच्छा उसका हो गया and everything, and Ambreen seems to be very excited about the course and everything. That is related to a particular syllabus, right? हमने भी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद जब एंटर हुए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो एकदम से शॉकर था कि ये क्या हो गया, टीचर्स ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और ये हमारे साथ एकदम से दुनिया ही बदल गई है, राइट? दैट इज फॉर अ स्टैंडर्ड डिग्री, राइट? आप इंजीनियर बन रहे हो या कोई भी डिग्री आप ले रहे हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, ये तो उनका रिएक्शन है. अब दिस इज अ न्यू डिग्री, राइट? एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये फर्स्ट ही बैच होगा जो कि पास आउट हो रहा होगा, राइट? सो इसका तो नाम भी किसी ने सुना नहीं होगा. आहिस्ता आहिस्ता ओवर सर्टेन मंथ्स आप वो क्रिएट कर लेंगे. आई एम प्रीटी होपफुल विद द सेशंस लाइक दीज एंड विद मोर स्टूडेंट्स लाइक अमरीन एंड अदर्स. सो एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही होगी, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, इन स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ. फर्स्ट बैच स्पेशली द टफेस्ट सिचुएशन फॉर द फर्स्ट बैच. So how are you going to or planning to prepare your students for the corporate world with this particular degree which is new and first time they are going to pass out? तो ये question सारे students और उनके parents के ज़हन में होगा. Students को आप छोड़ दें, उनके like I'm also a parent, तो I'm also very critical in evaluating what my son is studying, वो क्या पढ़ रहा है, कौन से books हैं और इसका relation corporate से कैसे होगा. मैं उसको कहती रहती हूँ, he's doing undergrad in CS, तो मैं उसको कहती रहती हूँ आजकल ये वाली language ज़्यादा in है, इसके ऊपर खुद से कुछ कर लो. And like any other nosy parent, I'm also similar. So how are you going to prepare when the parents also don't know कि market में क्या इसका trend है? So ये एक challenge है जो कि parents की तरफ से आपको question होगा इसके ऊपर. So can you enlighten us on that? Brilliant question, Toima. I wasn't expecting anything less. Badr, I'll let you take the first. मैं कहने लगा था ये मेरा ख्याल है ये मेरी job description है जो आपने सारे सवाल पूछे. Or this is exactly where I come in as an executive in residence. The whole idea is कि हम academia और industry को closely connect कर सकें. So as a practicing professional and an entrepreneur and running my own tech company, सबसे बड़ा फायदा ये था कि मैं इंडस्ट्री में कनेक्टेड हूँ, इंडस्ट्री की एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के जितने प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन. सो ये दो इंपॉर्टेंट, एक तो ये डिग्री शॉर्ट हैंडेड डिग्री है ताकि आप जल्दी टाइम टू मार्केट आपका फास्टर हो, विच इज जैसे अभी सारे ने बात किया, इट इज लेस अबाउट जो है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट नाउ. तो एक वो इम्पोर्टेंट चीज हमने ध्यान में रखी. दूसरा, starting August until December, all these students will now be embedded in the industry with practically graded internship or तो वो भी एक बहुत important factor है. उन few months में हम as part of the management will be working with their employers and the students कि हम उनको grade भी कर सकें. और grading इसलिए not from any other perspective but to help them connect better within the organization and see कि वो कैसे हो. तो हम उसके लिए इस वक्त एम्प्लॉयर्स के साथ ही एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहे हैं कि हम उनको रैंडम नहीं कह रहे कि अपना सीवी ले जाएं और वहां जाके आप इंटर्नशिप कर लें और वहां बैठ के आप फोटोकॉपीज करें, बट रादर वी आर इवन वर्किंग विद द एम्प्लॉयर्स कि ये एज इंटर्न्स फॉर दोज फ्यू मंथ्स क्या एग्जैक्टली करेंगे, क्या रोल्स होंगे इनके, वेयर विल दे बी प्लेस्ड बेस्ट, व्हाट रोल्स कैन दे एंटर इनटू, और किन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेंगे. सो एक ये. दूसरा, हमने एक और काम रखा कि हमने जितने भी ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे हैं हर डिफरेंट स्पीकर्स और जो इंडस्ट्री के एक्टिव लोग हैं उनको एंगेज करें हर स्टेज पे, और जो प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स भी दी जाएं वो भी कटिंग एज रेलिवेंट हो. सो रादर देन टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बहुत सारा कोर्स वर्क और केस स्टडीज तो अवेलेबल है,
बट हमने डिजिटल वाली साइड को और टेक्नोलॉजी वाली साइड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए उनके मसला है कि वो चीजें भी डॉक्यूमेंट नहीं हुई। I mean, it's so ever evolving and quickly evolving. सारा कुछ हो रहा है कि हमने कोशिश की इनको real time involve करें. So from the popular brands like the Dras and the Food Pandas and everyone, we are engaging all of them to even established branded companies as well. So startup से लेके हर किसी को हम involve करें ताकि हम ना सिर्फ success stories बल्कि failures को भी समझ सकें कि क्या reasons थी, क्या challenges रहे, and what those founders now think can be improved. ताकि ये लोग जब मार्केट में जाएं, ऑफ कोर्स देखें कोई भी काम करेंगे, कोई भी बिजनेस हैज देयर ओन रिस्क्स एसोसिएटेड टू इट, बट आप अपना जो जिसको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ फेलियर वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं with more hands-on information. So that's how we are trying to, but we are open to ideas, and that's one reason we have with you today this webinar. कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें इंडस्ट्री से बताएं कि हम और क्या चीजें बेहतर कर सकते हैं, क्या what could be the roadmap. So would love to have your thoughts and feedback on it as well. Yeah, sure. That's brilliant, I think. By the way, मैंने अपनी बिल्कुल job description पढ़ी नहीं है कहीं से. This was totally extempore and real. That's a good plan. That's a good plan, I must say. Supply demand की जब मैंने बात की तो this is exactly what I meant कि it's in our favor कि अगर 30 students हैं and the demand is huge, so STSP में बैठ के हम लोग match making कर सकते हैं. So हमारा idea was कि हम पास्ट की चीज़ों पे काम ना करें, हम वी एक्चुअली आस्क द इंडस्ट्रीज कि आप हमें अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेके आएँ, उसके ऊपर हम स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे. वी विल प्रोड्यूस अ केस स्टडी, वी विल लेट देम वर्क विद यू एज एन इंटर्न ग्रुप और एज अ प्रोजेक्ट, और इसको इमर्जन या इंडस्ट्री इमर्जन कह लें. सो हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट और इंडस्ट्री की नीड को अलाइन करें ताकि ये एक प्रॉपर जॉब में रिजल्ट करे. सिर्फ इसलिए नहीं कि अब इंटर्नशिप हो गई, अब जॉब इंटरव्यूज होंगे. वी डोंट वांट टू ब्रेक इट इनटू टू मेनी पीसेस, सो वी एक्चुअली ब्रिंगिंग इट बैकवर्ड्स. हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. हमारी बहुत दफ़ा पिचेस के अंदर और इस तरह के सेशंस के अंदर इंडस्ट्री के लोगों ने हमें कहा है कि ये वाले स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है. ही और शी वॉज कम्प्लीटली आउटसाइड द बॉक्स, वॉज वेरी क्रिएटिव, वी वॉन्ट टू नो ये कौन है. सो देयर एक्चुअली इस वक्त एक्टिव हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है. और आप सही कह रही हैं, दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन. कुछ साल लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड ये दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसकी मैच मेकिंग को परफेक्टली इस तरह से करें सेट कि उनको हमारी वैल्यू दिखे और हम उनको कैप्चर कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को साथ लेके उसको सॉल्व कर सकें. सो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग कंसर्न. Ambreen, do you have a question for Toima at this point in time? Yes, I think a question from my side, and I believe this is something that the whole of STME we feel, is that what do you think a mindset should we bring to the platform, a mindset for surviving or working within the tech industry? Brilliant question. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बल्कि ये इस बात पे मैं भी बात करना चाह रही थी, और जनरली जब भी मैं किसी यंगस्टर्स वाले फोरम पे बात कर रही होती हूँ तो मैं जनरली ये रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ तमाम यंगस्टर्स के साथ कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड या कॉर्पोरेट सेक्टर या एंटरप्रेन्योरल सेक्टर जो है दैट इज वेरी रूथलेस, दैट इज वेरी क्लियर, राइट. आप जितना मर्जी अच्छा CGPA लेके निकलते हैं, जितने मर्जी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स असिस्टेंट होते हैं, RAs होते हैं, जो भी आपका प्रोफाइल होता है, दैट वाज एज अ स्टूडेंट. व्हेन यू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड या व्हेन यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, सो यू आर अ बिजनेसमैन, अ बिजनेसवुमन, या यू आर अ कॉर्पोरेट एंटिटी नाउ, राइट. द वर्ल्ड टोटली चेंजेस आफ्टर दैट. ठीक है, लेकिन जब आपने एंटर होना है तो आपने एज ए न्यूबी एंटर होना है. सो डोंट थिंक कि आपकी वहां से पहले से कोई रेपुटेशन बनी हुई है, आपके पास लम्स की डिग्री है तो हर कोई आपको सुन लेगा, आप बाहर से भी पढ़कर आ जाएं. सो उसके उल्टा भी हो सकता है कि लोग आपसे इंटिमिडेट करना होना शुरू हो जाएं, लोग आपसे इनसिक्योर हो जाएं, राइट. और जब कोई इनसिक्योर होगा ना तो वो सर्वाइवल में चला जाएगा, और सर्वाइवल में जाएगा तो वो आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल कर देगा कि आपका वहां पे रहना मुहाल हो जाएगा. एंड अल्टीमेटली यू डिसाइड कि अच्छा ये तो कंपनी ही फारेग है, या ये तो बिजनेस ही ठीक नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के चला जाता हूँ, राइट. दैट इज नॉट द सोल्यूशन. टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट, Ambreen, one has to be flexible and one has to constantly assess, and your observation skills should be strong enough that you try to understand the surroundings, you try to understand the culture of the company or the business in which you have decided to start, right. ये बहुत important चीजें होती हैं. You need to understand the people around you. बोथ वेज तो होती है चीज, ठीक है, कंपनी ने भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब करनी होती है, लेकिन वो बिगर एंटिटी है. डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके जाते ही बस खुद से चेंज हो जाएगी और आपके मुताबिक चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. वो ये कहेंगे कि दिस इज द ऑड वन आउट,
इसको आउट ही कर दें तो बेहतर है, राइट? सो वो बेहतर ये है कि यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू योर कंप्लीट होमवर्क अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर ज्वाइनिंग, यू नीड टू नो द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब तो इतना आसान हो गया, सोशल मीडिया से आपको लोगों का पता लग जाता है कि कौन कितना प्रोफेशनल है और कैसा उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ईमेल एड्रेस आपको बहुत कुछ बता देता है। So, अक्सर जब सीवीज भी मैं शॉर्टलिस्ट कर रही होती हूँ तो मैं ईमेल एड्रेस जरूर देखती हूँ अपनी टीम के लिए जब मैं शॉर्टलिस्टिंग कर रही होती हूँ, या फेसबुक प्रोफाइल उसका बता देता है। सो ये सारी चीजें जो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक होमवर्क करके जाना है। और ये मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा सा इस पे दोबारा एक दफा ना ये रिपीट कर दें, ये आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज क्रिटिकल एंड लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स डोंट रियलाइज कि आपका ईमेल एड्रेस की फॉर्मेशन, आपका सीवी, आपका सोशल प्रोफाइल्स जो कि आपने अज्यूमिंगली अपने लिए बनाए थे, बट क्योंकि वो इंडेक्स हुए हैं सर्च इंजन्स में, तो वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है एंड पीपल, तो एज एन एम्प्लॉयर, मुझे अंदाजा था लोग रिश्तों के लिए भी चेक करते हैं, बट एज एन एम्प्लॉयर आप, I want you to please highlight this fact, very important fact, कि आप यंग लोगों को जब रिक्रूट करते हैं तो आप कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं ऑनलाइन डिजिटल। Yes, क्योंकि बदर वही वाली बात है कि when you have a Facebook account, Twitter account या Instagram, तो don't think आपने जितनी मर्जी प्राइवेसी लगा दी हो, ये हो ही नहीं सकता कि आपकी प्राइवेसी बार्जन ना हो जाए, ठीक है? आपकी प्राइवेसी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। I strongly believe that। और अगर मैंने किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो मैं 2-3 अकाउंट्स मेरे बने होंगे, ठीक है? वहां से मैं एंट्री डालूंगी, किसी ना किसी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से जाके मुझे पता लग जाएगा वो इंडिविजुअल कैसा है, राइट? सो especially when you are making your CV, so अगर आपका जैसा मर्जी prettyflower@yahoo.com या और जैसे मर्जी email addresses है, those are your personal email addresses, keep them to yourself, don't mention those email addresses on the CV, because वहां से आपकी perception बननी शुरू हो गई है, right? And second thing is your Facebook profile, your Instagram profile। अक्सर लोग समझते हैं कि जी Instagram को आपने private कर दिया तो Facebook से ज्यादा privacy है उसके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी प्राइवेसी भी, आप फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में जाएंगे तो वहां पे आप पकड़े जाएंगे, सो आपका सारा पता लग जाएगा। और जब आपने कोई हरकत की ऑर्गेनाइजेशन में, या जब आपने पलट के अपने सुपरवाइजर को कोई जवाब दे दिया, ये सजेशन ही दे दी, वो फौरन सर्च करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी है कैसी। उसके बाद वो एक परसेप्शन बनाएगा आपके मुतालिक, वो अपने बॉस के पास जाएगा, वो अपने बॉस के पास जाएगा, और आपका करियर पे वहीं से एक ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाएगा, जो कि एक्सपैंड होता जाएगा, वो कम नहीं होगा। क्योंकि शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं उसके अंदर one has to be very careful in establishing your image, because the image matters a lot. Your competence, your skill set, your degree is important, but first of all your personality, the personality and the mindset and the learning attitude, कि आप सीखने आए हैं कि आप सिखाने आए हैं। जब आप डिग्री लेके जाएंगे, स्पेशली विद डिग्री लाइक दिस वन, जिसके ऊपर ऑलरेडी शायद वो स्केप्टिकल हो रहे हो कि अच्छा इससे मैं वो वाला काम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, ये मेरे बजट पे बर्डन तो नहीं बन गया ये बंदा। और ऑफ कोर्स इफ यू हैविंग अ मास्टर्स डिग्री, you must be offered a good package from the market, right? और जब उस पैकेज के साथ जाएंगे तो जितना पैकेज आपका बढ़ता जाता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव, आप लाइबिलिटी भी बनते जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यस बिल्कुल, और ये नेचुरल सी बात है। एक बच्चा जो 50,000 पे हायर हो रहा है और एक बच्चा जो 100,000 पे हायर हो रहा है। सो अक्सर लाइन मैनेजर मुझे कहते हैं कि देखे ना तोयमा, वो दूसरा XYZ को मैंने हायर किया, वो 55,000 ले रहा है, वो उससे ज्यादा काम कर रहा है जिसको जो मैंने 1.5 लाख पे लिया, तो उसको फारिग करें। सो दैट हैपेंस, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग। द मोर यू आर एक्सपेंसिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, द मोर लाइबिलिटी इज देयर ऑन यू, बिकॉज यू हैव बिकम अ लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। So first thing first, you need to be flexible in your thought process. You need to be very, you can say, a good listener, और सिर्फ सुनना नहीं है, उसके मुताबिक अमल भी करना है। और थोड़ा सा टेम्परेरीली अपने आप को मोल्ड भी करना पड़े तो देयर इज नो हार्म, दैट इज अ लर्निंग ना। तो आपकी ही प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो रही है। उसमें ये सोचना कि नहीं जी मैं तो देखो ना, मैं तो स्पीचेस भी करता था, मैं तो स्टेज पे टीचर को सपोर्ट भी करता था, मैंने पूरे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर लिए, अब ये मुझे बताएंगे कि कैसे काम करना है। There comes the problem. So वहां पे आपको you need to be, as a student or as a newbie in the corporate sector or in the business sector, you need to be flexible. You need to have an open mindset. If you have got a fixed mindset, बल्कि I would recommend a book over here by the name of Mindset, जो Dr. Carroll की है, जो बेस ही कर रही है हर
टाइम पीरियड आपके लाइफ साइकिल के अंदर जिस जिस स्टेजेस से आप हम्म गुजरते हैं आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें बहुत अच्छे सिनेरियोस मेंशन्ड हैं कि फिक्स माइंडसेट के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, और अगर आपने अपने आप को फिक्स कर लिया तो यू आर गॉन, देन you won't be surviving anymore. So Thank you, that's Toimani. I think a growth mindset is weaved into the program. So LUMS is yeah. very careful, especially जो छोटा size है बैच का 30 बच्चे हैं 31 स्टूडेंट्स के साथ, हमारे लिए बहुत easy इनको मैप करना. और I think Badar continuously talks about it कि outlook क्या है आपकी और importance क्या है. And I think Amreen's question is also very valid कि now they're thinking about this कि किस तरह से हमने इसको करना है, approach करना है. And it is very important कि आप अपने professionalism को visually आप प्रोटेक्ट कर सकें और उसको आप कंटिन्यू कर सकें. So I think that's a very valid question. I would want to go to Badar after this. Badar, you want to add something जी to the discussion? सारे बिल्कुल. मैं अमरीन को थोड़ा सा रियलिटी चेक एक और देना चाह रहा था कि जरा इस प्रोग्राम के साथ ना आपका जो एटीट्यूड है वो माइंडसेट वो एक्स्ट्रा डिफरेंट होना या फ्लेक्सिबल होना जरूरी है. द रीजन के इस प्रोग्राम की रीजन जो तोयमा और मैं पहले बात कर रहे थे कि हमने आप लोगों ने अपनी एक स्पेस क्रिएट करनी है. तो वहां ट्रेडिशनल आपके लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं होंगी. दीज विल बी न्यू जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड न्यू रोल्स. सो यू नीड टू क्रिएट योर ओन स्पेस एज वेल. कई जगहों पे वो हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल रोल में इंडक्ट हों, बट वहां आपको अपना नया रोल खुद कार्व आउट करना पड़े. विच मीन्स कि जो भी तोयमा बात कर रही थी कि आपने स्टेटस को चैलेंज करना है, बट कीपिंग इन व्यू कि आप किसी को ऑफेंड ना करें. सो दैट्स अ वेरी हेयर लाइन डिफरेंस प्ले जो अब आप कर रहे होंगे कि आपने आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट को एक नई डायरेक्शन में भी लेकर जाना है, अपना डिफरेंट ओपिनियन भी प्रेजेंट करना है. बट वहां माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी और अप्रोच में बिहेवियर में बड़ा पॉजिटिव या प्रैग्मेटिक रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ डबल टफ job going into the market with this. Can I quickly add something here, because this reminds me कि जब MBA और MBA के mindsets की बात करते हैं तो हम उनको compete करना सिखाते हैं. They're ruthless. They're supposed to compete. उसमें class fellows नहीं है, friendships नहीं है. They're supposed to step on each other's heads and shoulders and get ahead. मास्टर्स प्रोग्राम और स्पेशली टेक इकोसिस्टम में जब मैं देखती हूँ तो कोलैबोरेशन पे जो बिजनेस मॉडल्स रन हो रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करें. तो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही बात करती हूँ कि आप कोलैबोरेट करें. आपको लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं, आपको मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं. ब्रिंग समवन ऑन योर टीम, ब्रिंग देम ऑन बोर्ड जिनको आता है और उनको मैनेज करें फिर. सो आई थिंक अमरीन इज विटनेस टू दिस कि जब हमने ऑनलाइन सेटिंग में कम्प्लीटली शिफ्ट किया, हमने लर्निंग मेथोडोलॉजी ट्राई की और हमने टीम्स बनाई क्रॉस फंक्शनल. तो जो आपका पहला सेमेस्टर है उसमें आप हेल्थ मैनेजमेंट और बिजनेस पॉलिसी और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स में 7 बिजनेस को समझा. बड़े डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आए थे, बड़े चैलेंजेस थे. कोई कहता था हो सकता है, कोई कहता था नहीं हो सकता. हमसे क्यों बैलेंस शीट्स बनवा रहे हैं, हमें क्या हमसे क्यों अकाउंट्स जो है ना टी अकाउंट्स मैनेज करवा रहे हैं, हमने क्या करना है. आपने समझना है ताकि आप मैनेज कर सकें. कोलैबोरेशन के लिए भी आपको आई थिंक वही वाली बात है, स्मार्ट दैट सेंस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू, IQ का जो एक सेंस होती है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव उससे मिलती है. सब कुछ करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है ताकि कोई आपको आपके डिपार्टमेंट को या आपको हुडवैंक ना कर सके. सो आई थिंक अमरीन क्विकली इफ यू कैन टॉक अबाउट ऑनलाइन लर्निंग से फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हुई डू यू थिंक. और फिर मैं तोयमा से पूछना चाहूंगी कि ऑनलाइन डिग्री वाले बच्चों को जॉब्स मिल जाएंगी. ये तो नहीं होगा कल को आप कहें कि जी आपने तो ऑनलाइन MS किया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. सो बोथ ऑफ यू इन ऑर्डर. अमरीन गो अहेड प्लीज. No, ma'am, definitely. I think online learning, like I said before, it was an adjustment. So it's something that you adjust to with time. And the fact that we were studying. आप लोगों ने resist बहुत किया था वैसे. Just let me just put this in कि आप लोगों ने full जोर लगा दिया था कि हमने नहीं पढ़ना ऑनलाइन. तो what happened? Like कुछ फायदा हुआ, कुछ बाद में afterthoughts? Ma'am, I think उस वक्त consequences जो थे, we knew that this is something that we have to go forward with, and as we did, उस वक्त फिर खुद ही एक realization आ जाती है that okay, maybe some things are more flexible online. If an example I would give is that our lecturers were so prompt and they were so cooperative कि कभी भी कोई मसला होता था in a project or anything, you could reach out to them, you can have an informal session on Zoom. this is something जो traditional classroom में नहीं हो पाता था. And I believe that वही जो हमने we got used to online learning, and the fact that we were studying entrepreneurship, and ये बात हमें second semester में बोली गई थी that अगर entrepreneur बनना है तो flexible होना है. You should be adaptable, and that is something that actually was in my mind कि आएंगे hurdles आएंगे in life, be it your job or your studies, you have to be flexible.
And even जो हमारी classrooms थी, they were not in those monotonous tones of that the professor is True. going through. It was actually a 90 minutes of interactive discussions where you are interacting with students, you are interacting with lecturers, and you are interacting with individuals that are doctors, that are engineers, and that possibly don't have a professional background. So all of that makes you learn a lot. And definitely, I think it's very student-centered learning. We try to keep it. So तोयमा आप ले लेंगी हमारे ऑनलाइन पढ़े बच्चे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सिस्टम्स लिमिटेड की क्या प्रोफाइल है? आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर न्यू हायर्स? What should they know? किस किस्म का स्किल सेट होना That's a चाहिए? tricky question, you know. It's not only about Systems Limited. It's generally about the economy and other of the companies as well. अगर ये question आप मुझसे कोई 2020 के first quarter में पूछती तो शायद मेरा जवाब different होता. आज मेरा जवाब different है, right? क्योंकि वही वाली बात है कि like every other organization, tech industry has also evolved, right? And the good part, the blessing of the technology कि हम लोगों का सब कुछ चूंकि in-house था, brain भी in-house था, इसलिए हम लोगों ने बहुत जल्दी equip कर लिया अपने आप को with the changing dynamics and changing requirements, right? So degree online है या in person है, we really don't care. Like any other technical organization. हाँ, कुछ जगहों पे ये मसला बहुत बड़ी होगा। चेंज है वैसे सारा जो ये बहुत बड़ी चेंज है। Yes, बहुत बड़ी पिछले change है। 1-1.5 साल में चेंज आई है। Yes. और यकीन माने बदर कि जब हमारा फर्स्ट क्वार्टर था 2020 का, we were very skeptical despite of our volume, despite of our size in Pakistan, and we were doing माशाल्लाह से pretty good. लेकिन उस वक्त जब सब कुछ चेंज हुआ तो एक लम्हे के लिए हम भी थोड़ा रुक गए और हमने सोचा कि ये पता नहीं हम सर्वाइव कर सकेंगे कि नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी हिट हुई, हमें भी बहुत मसला हुआ क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स में मसला हुआ। सो वो एक आध महीना थोड़ा लगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। एकदम से हमने चीजें नीचे नहीं की, लेकिन हमने बहुत से इनिशिएटिव्स रोक दिए, अपने एम्प्लॉय डेवलपमेंट की भी चीजें एक आध महीने के लिए हमने रोक के थोड़ा स्टेप बैक करके वी स्टार्टेड ब्रीदिंग हेवीली एंड वी टुक अ ब्रेथ एंड देन वी थॉट कि नहीं, वी कैन सर्वाइव। भाई सारा ब्रेन तो हमारे पास मौजूद है, व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट ब्रेन, व्हाई नॉट मूव एवरीथिंग ऑनलाइन। एंड सो मच सो कि हमने अपना बीपीओ जो कि डेस्क जॉब करता है 100%, हमने उसको भी ऑनलाइन कर दिया। सो दैट वाज अ बिग चेंज। इट टुक अ क्वार्टर और सो, लेकिन इट वेंट सो प्रीटी वेल अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमें पता ही नहीं लगा कि वो ट्रांजिशन कैसे हुई। एंड सो फार अभी भी हम देख रहे हैं कि अच्छा 2 महीने और वर्क फ्रॉम होम होगा 50% का, इट्स फाइन, वी कैन सर्वाइव। 2 महीने और भी हो गया तो भी वील सर्वाइव। एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द हायरिंग, जो हमारी एनुअल हायरिंग होती है वो हम उसी तरह कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग द सेम वे। हमारी पर मंथ ज्वाइनिंग अगर मैं देखूं तो एवरेज 150 है ओनली इन द टेक्निकल साइड। ठीक है, 150 is a very big. Systems is a public limited company, Sara, and this is important to realize कि it is not a startup. Toyma is not representing a startup जो कि maybe शायद niche में बात करें। As one of the largest companies and the top exporters of Pakistan in IT sector, Systems sets the tone, and one of the oldest companies actually. So for the rest of the industry, so I think this coming from Systems learning, this is critical for our students and the coming batch कि ये change accept हो रही है और आगे इसी की तरफ डायरेक्शन है। मैं ये भी हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो विंड ऑफ चेंज होती है, जब चेंज शुरू होती है, एक नेक्सस होता है ना, स्टॉर्म का एक आई ऑफ द स्टॉर्म होती है, जब सब कुछ फ्लक्स में होता है ना, तो बहुत अपॉर्चुनिटी तो चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं अपने यंगर स्टूडेंट्स और यूथ को कहना चाहती हूँ जो देख रहे हैं कि आप डोंट गिव अप, इतनी जल्दी दिल ना हारें कि नहीं हो सकता एडमिशन, लम्स में तो कभी भी नहीं हुआ, होगा ही नहीं, पता नहीं कितना मुश्किल होगा, क्या करें। आप लिखें, आप पर्सनल स्टेटमेंट में लिखें आप ये क्यों करना चाहते हैं, हमें बताएं आप इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रेन हम करेंगे आपको। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स, हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स, हमारे ऑल आवर रिसोर्सेज आर गेयर्ड टूवर्ड्स इफ यू कैन हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस वक्त ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं जो आज से 10-15 साल पहले आप लोग नहीं सोच सकते थे कि करते साथ ही ग्रेजुएट आप क्या कर सकते हैं। तो पोटेंशियल को अंडरमाइन मत करें, अपने आइडियाज़ को पेन डाउन करें। आप हमारे ईमेल एड्रेसेस एक्सेसिबल हैं, हमें ईमेल करें, हमें बताएं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, वी विल सॉल्व दोज फॉर यू एंड गेट यू इन द प्रोग्राम इफ़ यू वांट टू। लेकिन कोशिश करना बढ़ा के, यू कांट गिव अप। और एक बात मैं और हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आजकल शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मेकिंग मनी, there's no shortcut, there's no quick shortcut। मुझे पता है कि डिग्रीज पे रिलायंस कम हो रही है, बट स्किल सेट्स पे रिलायंस कम नहीं हो रही। ये कहीं नहीं लिखा कि स्किल्स नहीं चाहिए आपको। सो वो स्किल्स आप कुछ 1-2 महीने कोर्सेज करके ले सकते हैं, पर उनको सस्टेन करना और स्केल करना,
ये एक प्रोसेस का पूरा एक प्रोसेस होता है इसके पीछे। सो मैं आपको फिर इनकरेज करूंगी कि आप वेबसाइट पे जाएं, इसका मॉड्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कोर्सेज की डिटेल्स पढ़ें, क्या पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। ये हमारा वादा है कि हम हर साल और हर सेमेस्टर और हर टर्म के लोगों को चेंज करेंगे, नए लोगों को लेके आएंगे, रेलेवेंट केस स्टडीज, रेलेवेंट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। हम विल मेक श्योर कि आप लोग एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर अपॉर्चुनिटीज निकालना आपका काम है, हम आपको प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करेंगे। whether you want to talk about कि किस किस्म की जॉब्स या प्रोफाइल्स या टाइटल्स होंगे, या हाउ डू यू सी कि हमारे ग्रेजुएट्स मार्केट में जब जाएंगे तो वो क्या रोल प्ले करेंगे, थोड़ा सा अगर आप हमें स्किल सेट वाइज बता सकें क्या आना चाहिए और क्या कर सकेंगे वो जरा सारा, डिटेल। मैं आई कांट एम्फसाइज मोर विद द फैक्ट कि आप सोचें जो चीज एक हफ्ते पहले तक नहीं हो सकती थी वो कल से एक्टिव हो गई है कि अमेज़न ने पाकिस्तान में अपने सेलर्स अलाउ कर दिए। अब अमेज़न के दुनिया में तकरीबन 200 के करीब फुलफिलमेंट सेंटर हैं, 175-200 के करीब। उनके 300 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं, यानी कि 30 करोड़ एक्टिव बायर है उनका। अब हमारे एसएमईज के लिए इट्स अ टोटली पैराडाइम शिफ्ट कि हमने कैसे अपने B2B एक्सपोर्ट्स के बजाय B2B2C को एक्सप्लोर करना है। अब ये फर्क समझना कि B2B और B2B2C में क्या फर्क है, क्या न्यूआंसेस हैं, is something which Ambreen can relate to कि these guys have gone through it during the course of the program। और और ये नई चीजें आती रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल हमने पिछली दफा हमने शायद अमेज़न पे ज्यादा फोकस नहीं किया, B2B2C पे फोकस नहीं किया, बिकॉज तब तक ये रियलिटी नहीं थी पाकिस्तान के लिए। इस दफा करेंगे। स्टार्टिंग लास्ट वीक दिस इज नाउ अ रियलिटी, यानी कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, हर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन इज मेकिंग एन एफर्ट टू मेक श्योर कि अमेज़न का इस वक्त स्टेट बैंक से लेके एफबीआई, एवरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग एन एफर्ट कि ये फैसिलिटेशन पूरी हो सके कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर सकें। तो ऑफ कोर्स ये जिस तरह आपने कहा वो विंड्स ऑफ चेंज, पहले वो भी शायद सालों में एक दफा होती थी, अब ये महीनों और दिनों में रोज चेंज हो रही हैं। सो जो रोल्स हैं, जो आपने सवाल पूछा, वो रोल्स भी चेंज हो रहे हैं, नए टोटली। फॉर एग्जांपल अब हम आपको वर्चुअल असिस्टेंट्स चाहिए, आपको डेटा साइंटिस्ट चाहिए, आपको क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स चाहिए। अब खाली कंटेंट राइटर और क्रिएटिव कंटेंट राइटर जो कि एसईओ समझता हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इज अ वेरी स्पेसिफिक नीश कि क्रिएटिव कंटेंट राइटर फ्रॉम एन एसईओ पर्सपेक्टिव। इसी तरह आपको डिजिटल बिजनेस डेवलपमेंट के लोग चाहिए जिनको टेक्नोलॉजी शायद हैंड्स ऑन ना आती हो, प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग करनी, जैसे आपने पहले बात की, बट उनको इतनी समझ हो कि वो एक टेक्निकल प्रोडक्ट को बेच सकें किसी कस्टमर को, या उसको कन्विंस कर सकें। तो प्री सेल्स के नए रोल्स हैं। इसी तरह अकाउंट मैनेजमेंट के या क्लाइंट सर्विसिंग के नए रोल्स हैं। फिर एक नई टर्म है इनसाइड सेल्स की, कि आपने बैठ अंदर रहते हुए कॉल्स पे, ईमेल्स पे आपने ऑनलाइन सेल्स करनी है, रादर देन बीइंग अ एक्टिव सेल्स पर्सन गोइंग हैंड डे टू डे, डोर टू डोर। तो आई थिंक इवन विद इन द ट्रेडिशनल रोल्स भी नई इनोवेशन आ रही है, और नए रोल्स तो बिल्कुल नए हैं, लाइक प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए, या यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हो गए, सर्विस डिजाइनर्स हो गए, कम्युनिटी मैनेजर्स हो गए ऑनलाइन। सो बहुत सारे नए रोल्स हैं। जैसे तोयमा ने बहुत अच्छी तरह बात की कि जरूर आप एक्सप्लोर करें इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और जो ट्रेडिशनल हमारे करियर्स या प्रोफेशंस हैं, बट इवन विद इन दोज रोल्स टीएमई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एक डॉक्टर ने एक अपना ऑनलाइन क्लिनिक कैसे मैनेज करना है, इज दैट्स एग्जैक्टली वेयर अ टीएमई पर्सन विल कम इन। एक ट्यूशन पढ़ाने वाले ने या एक कारी साहब ने अगर ऑनलाइन कुरान पढ़ाना है, तो उनको अगर स्किल पे काम करना है, तो दैट्स एग्जैक्टली वेयर अ टीएमई पर्सन और अ ग्रेजुएट विल कम इन। इसी तरह एक स्टार्टअप ने ग्रो करना है जो टेक्नोलॉजी समझते हैं सिर्फ, बट उनको मार्केटिंग, लीगल, फाइनेंस, अकाउंटिंग वगैरह नहीं पता, अ टीएमई फ्रंट एंड वुड डिलीवर दैट। सो इस आई थिंक बहुत सारे रोल्स हैं। और इसी तरह जब एमबीए ग्रेजुएट्स को बिग आइडिया लेकर आए और उसमें टेक्नोलॉजी वालों से काम कराना है, दैट्स एग्जैक्टली अगेन अ TME person will come in and talk to both of them in the same on the same frequency। तो बहुत सारे नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं और होते रहेंगे ये। सो हमने इंटरसेक्शन के ऊपर उनको बैठा दिया, हमने क्रिएट कर दिया, हमने बैठा दिया, और हमने ये बातचीत शुरू कर दी। अब हम चाहते हैं कि तीनों सेक्टर्स आपस में बात करें। सो NIC में जब कोई आता है होस्ट कर, अब हमारे एटलीस्ट 21-22 आई थिंक इस दफ़ा आइडियाज़ इनक्यूबेट हुए हैं, हमने उनसे बातें करना शुरू कर दी। हम उनसे समझ रहे हैं इकोसिस्टम का, देखिए मतलब यही होता है कि इट्स गोइंग टू बी अ 2-वे एक्सचेंज, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ 1-वे। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतने सालों से एकेडमिया हैज़ बीन 1-वे एक्सचेंज। हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे समझना है, हम डिग्री देंगे, आप जाएं जाके जॉब ढूंढें। सो वो अब चेंज हो रहा है, इट्स अ 2-वे इनफ्लक्स। हम ब्रॉडकास्ट से इंटरेक्टिव हो गए।
So in those I terms. think it was a rare case कि आप अपने students को, active students को in a webinar setting या in a placement setting students इतने active हों जिसमें आज अमरीन हमारे साथ जिन्होंने join किया है, या आप practically employers को directly engage करें. तो I think things are changing and I think we are at the forefront, at the cutting edge of that. I think जब हम बिजनेस मॉडल्स की बात भी करते हैं तो what excites me is कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स अब आर्केक हो गए, बहुत हैवी हो गए, they have a lot of dead weight. Just like this degree, ये भी एक उसी नए बिजनेस थॉट प्रोसेस पे क्रिएट की गई है कि हम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करेंगे. You tell us कि कौन सी स्किल सेट्स हैं, कौन से आइडियाज हैं, what needs to be learned, जो नीड ऑफ द आवर है, और हम उसको quickly, efficiently उसको instill करेंगे and those students will be ready to reap benefits immediately. So हमने कोशिश ज़रूर की है, but we are open to feedback. Please मेरा email address website के ऊपर है, बदर का भी है. Write to us, give us feedback, ask questions. All these concerns are very relevant. But as I said, these things are ever evolving. We cannot pin this कि अगले 3 साल तक ये job title इतने डिमांड में होगा. अब हम वो नहीं कर सकते. हम करते थे शुरू में, बहुत अरसा हमने इस मॉडल को चलाया. अब ये मॉडल इज वेरी वेरी क्विकली चेंजिंग. और आई थिंक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ड्यूल एज स्वॉर्ड है ना, बेनिफिट और डाउन साइड ये है कि जो स्पीड पे काम होता है तो उसमें या तो आपको समझ आई है तो नहीं आई, 4-5 साल गुजर जाएंगे और आपका एकदम से वो खत्म हो जाएगा. आप क्या करना चाह रहे थे, यू विल गो रॉन्ग. सो अगेन मशवरा करें जी. सारा मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था तोयमा से, स्पेशली आई नो वी हैव लास्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट. तोयमा, आप खाली एक आईटी कंपनी नहीं है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं. आपके मेजॉरिटी वेस्टर्न मार्केट्स में, यूएस में कस्टमर्स हैं. तो आप लोग एज अ कंपनी तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे या मैच नहीं कर पाएंगे वो वाली नीड्स या उतनी एजिलिटी जो वहाँ रिक्वायर्ड है इस वक्त जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं. तो थोड़ा सा उस एंगल से बताइएगा कि आपने थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम को देखा, समझा, कोई how do you see कि हम globally competitive भी कितने हैं, even for not only for the local market, even for the global market. वहाँ भी I'm sure कि ये needs बहुत important है. देखिए, besides IT companies, there are many businesses जिनका international associations मौजूद हैं, right? So that is a blessing for you all के जो भी नई चीज evolve हो रही है उसकी acceptability international market में in one way or another exist करती ही करती है, right? उसको सिर्फ explore करने की जरूरत है. जिस तरह जो roles या जो job profiles की बात आपने की थी बदर, I 100% second with that कि आपका business analyst लोकल हो या इंटरनेशनल हो, आपको उसकी जरूरत है. ठीक है, आपकी प्री सेल्स क्या होती है, यहाँ से बैठ के आपने पिच करना है अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को, राइट? और जनरली ये होता है कि ये एक स्किल सेट है जो कि शायद आईटी का टेक्निकल बंदा जो कि बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड मेरा टॉप रैंकिंग एम्प्लॉय है, शायद वो प्री सेल्स अच्छी नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसा सारा ने बहुत अच्छी बात की थी कोलैबोरेशन की, टीम वर्क और कोलैबोरेशन के अंदर जिस तरह का ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या इम्पॉर्टेंट हिस्से के तौर पे इम्बेड हो सकते हैं, उतनी अच्छे तरीके से एक टेक्निकल बंदा शायद नहीं हो सकता, लेकिन वो क्रिएट करने वाली बात है, वो अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज कराने वाली बात है. इनसाइड सेल्स, सारी इनसाइड सेल्स पाकिस्तान से होती है जी, इट्स वेरी क्लियर, राइट? लेकिन उसको एक्सप्लोर कैसे कराना है, उसमें लोगों को ट्रेन कैसे करना है, ठीक है, और उनकी यूटिलाइजेशन कैसे क्रिएट करनी है, ये कंपनी ने भी सोचना है, लेकिन इन लोगों ने खुद भी सोचना है, इन लोगों ने खुद भी बताना है कि भाई आई हैव दिस स्किल सेट, भाई सर मुझे आप क्यों नहीं यूज करते, आप मुझे क्यों नहीं इस चीज में इन्वॉल्व करते, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. टेक द इनिशिएटिव जरूर लें. एग्जैक्टली. अगर आप कहेंगे ना आप साइड पे हो जाए, मुझे करने दे, कोई नहीं करने देगा, ठीक है. अगर आप ये कहेंगे कि जी मुझे साथ में लाके मैंने आपसे लर्न करना है और फिर आप उसके अंदर कहें कि ये लर्न करते करते इसको ऐसे ना कर लें, वो फौरन आपका पार्टनर बन जाएगा, ठीक है. देयर इज अ वे, 100%. yeah, there is a way to communicate. Yeah. Agreed. We all need to learn that and continuously practice it. Yes, so guys, last 2 minutes left. I'll go through the panel and I'll want all of you to talk to potential or aspiring applicants and just last one word that you'd like to tell them. Badr, I'll start with you. What would you like to say to those who are listening? जी, बिल्कुल. I think जो हम सारी बात कर चुके हैं, लुबे लुबाब यही है कि change is there. इस चेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है और इस चेंज का पार्ट बनने के लिए हमें अपना माइंडसेट और एप्टीट्यूड ठीक करके वी नीड टू बी अ पार्टिसिपेंट रादर देन ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम आउटसाइड. हमें इसका पार्ट बनना है और हमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना है. जिस तरह हमने पहले बात की कि ना सिर्फ एक आधा दरवाजा कुछ बंद हुआ होगा पेंडेमिक से, बट आई थिंक बहुत सारे नए दरवाजे खुल गए हैं
और हमारे सही। यंग जनरेशन के लिए जो डिजिटली कनेक्टेड हैं, इस वक्त तकरीबन 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में डिजिटली कनेक्टेड हैं, उन सब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को स्किल्स को अपग्रेड कर सकें। और खास तौर पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी लम्स के ब्रांड नेम के साथ डिग्री लेना और फिर मार्केट में जाना एक सर्टनली वैल्यूएबल चीज है। सो इट्स अ वेरी कटिंग एज अपॉर्चुनिटी कि वो लोग इसको लेवरेज करें और फिर मार्केट में आए। तो आई थिंक एक ब्रांड का ट्रस्ट और फिर एक कटिंग एज कोर्स वर्क और मार्केट की इंसाइट्स और मार्केट के साथ कनेक्टिविटी, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर देम। Thank you. Ji Amreen, I'll move to you and then I'll come to Toima. So my advice for all prospective, candidates and students would be that आप ये सोचना छोड़ दें, and I want to say it coming from a student, admission मिलना मुश्किल है. Rather focus on getting through this degree, because of course it is going to be demanding. It is going to require you to put in extra hours to go beyond the case, to go beyond the coursework. But there's a mantra that we've learned in this degree is that high risk, high return, and every effort is that it pays off. So definitely everyone should consider it. And one thing that I would like to say for the female candidates that are watching, that LUMS actually has a female scholarship. There is no requirement, you just have to be a female. And personally, that was one of the things that actually attracted me to pursue this degree. So that is something that I would like to say for perspective. True. There's a caveat, though. You have to meet the merit. So whatever our minimum requirement is, you have to get the admission, and then all the women admitted to the program have a 50% scholarship. And I'm very proud of my current class dynamic. We have, I think, 67% women, and the rest are men. So I think there's no barrier at all in terms of gender also here. Toima, please. ये last parting वेबिनार में words. भी यही हाल है वैसे. मैं I can drop for that 100%. Not by design. It's look at the winds of change. Yes. Toima, please go ahead. Have the last word. It's simple, Ji. Nobody can walk your journey for you. You need to do it yourself. ठीक है ना? People can help you. People can support you. You need to identify right mentors for you. You need to have a positive mind frame. Only then you can be successful. That's a simple formula. Thank you so much. I mean, thank you very much, everyone, for your time and for your effort. And I am very excited to continue these discussions in the times to come. If you can't make it this year, inshallah, next year. But sooner or later, our paths will cross somewhere, someplace. And inshallah, I hope Pakistan prospers in this whole, dynamic discussion of creating value. Thank you. Khuda Hafiz. Hafiz. बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.